वडोदरा में फैब्रिकेशन के धंधे के साथ जुड़े हुए एक व्यापारी संजय भाई गुरानी की ओर से पुलिस कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तब उनकी ओर से आज एडवोकेट दर्शन पटेल को साथ में रखकर पुलिस कमिश्नर को इस मामले में लिखित अर्जी दी गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संजय भाई गुरानी जो कि फैब्रिकेशन के धंधे के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ओर से क्रेडिट पर लाखों का माल लिया गया था। तब इसी मामले के मद्देनजर जेपी रोड पुलिस थाने में फर्ज निभाने वाले पुलिस अधिकारी योगेश भाई चौधरी की ओर से कई बार उन्हें बिना अर्जी ले जाकर उनके साथ गाली गलौज की है, उनके साथ मार पिटाई की है और उन्हें धमकियां दी है। ऐसे आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। साथ ही गलत केस में फंसा देने की धमकी भी पुलिस अधिकारी की ओर से उन्हें दी गई है, ऐसा भी उनका कहना है। तभी ये सारे आरोप लगाते हुए उनकी ओर से इस मामले की लिखित शिकायत पुलिस कमिश्नर के पास दी गई है और इसीलिए उनके साथ आज एडवोकेट दर्शन पटेल भी मौजूद थे। तब आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। समग्र बनाव एवो छे के वडोदरामां फेब्रिकेशन धंधा साथे संकळायेल व्यक्ति संजयभाई बालचंद्रभाई गोराना के जेओ फेब्रिकेशन धंधा साथे छेल्ली 2 पेढ़ीथी जोड़ायेला छे। तेओना धंधामां अलग अलग जग्याएथी रो मटीरियल लेवानुं होय छे। तेवा संजोगोमां भाविकभाई साकरिया अने द्रुपलभाई पंभार के जेओ राजकोटमां पोतानो स्टीलनो धंधो धरावे छे, तेओ पासेथी भाविक संजयभाई नाओए રૂપિયા 14 લાખનો માલ લીધેલો હતો 1 મહિનાની ક્રેડિટ ઉપર, કારણ કે આ લોકોના ધંધામાં ક્રેડિટ ઉપર માલ લેવાતો હોય છે 1 મહિનાની। ત્યારબાદ પૈસા આપવામાં થોડુંક ઉપર નીચે થતાં જેપી રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવનાર પોલીસ અધિકારી યોગેશભાઈ ચૌધરી નાઓ તારીખ 19/12/2025ના રોજ ફરિયાદી સંજયભાઈ ગોરાનાની ઓફિસ ઉપર આવી સરકારી સફેદ કલરનું મોટરસાઇકલ પોલીસ લખેલી લઈને આવી અને ત્યાંથી લઈ ગયા। યોગેશ ઓફિસ ઉપરથી લઈ જઈ સંજયભાઈને જેપી રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક રૂમમાં બેસાડીને ધોલ ધપાટ કરી ગાળાગાળી કરી અને જણાવ્યું કે ભાઈ તું પૈસા આ લોકોને નહીં આપી દે તો તને તારા બાપાને કે જે તેઓના બાપા પણ ધંધામાં જોડાયેલા જ છે કે તું પૈસા નહીં આપે તો તને તારા બાપાને એનડીપીએસ જેવા કેસમાં ફસાઈ દઈશ કે જામીન કરાવી મુશ્કેલ થઈ જશે, આવી ધમકી આપેલી હતી। જેથી સંજયભાઈ નાઓએ તેઓને પૂછ્યું કે કયા આધારે તમે મને પકડી લાયા છે, તો કોઈપણ અરજી કે કોઈપણ ફરિયાદ વગર પોલીસ અધિકારી યોગેશભાઈ ચૌધરી ભાવિકભાઈને જે સંજયભાઈને ઉઠાવી ગયેલા હતા